This is what I make. I hope you enjoy, guys. You are just coming for tasting. Don't forget to like, share and subscribe for this to see more recipes from mine. हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। मैं बाहर जा रही थी किसी काम से। मेरी छोटी सी ब्रीफ मीटिंग है किसी काम से रिलेटेड किसी के साथ। सॉरी आई एम पैंटिंग बिकॉज मैं बहुत जल्दी निकली हूँ घर से। मुझे 11 बजे मिलना है और मैं हल्का सा लेट हूँ, पर आई थिंक हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है तो हम वहाँ जाएंगे। मेरे बाल पता नहीं क्या घोंसला हो रखा है, मैंने काढ़ा इनको, बट फिर भी दे आर नॉट रेडी टू गेट टेम्ड, बट व्हाट्सएवर, आई वेट फॉर माय बस नाउ। Entre nous, en secret, on joue. Entre nous, et peut-être c'est fou. Entre nous, on se souffle un petit bisou. Entre nous. So I had the meeting. I hope it went well. बाकी देखते हैं जो भी है। बट अब मैं चाहूँगी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बिकॉज मुझे मेरे ग्रोसरीज लाने थे एंड या दैट्स इट। बाकी मिलती हूँ आपसे घर पर। सो आई केम घर। मैं कुछ भी व्लॉग नहीं किया बिकॉज मेरे हाथ में बहुत सारा सामान था एंड आई वॉज हंग्री, तो मुझे जल्दी घर आना था और खाना खाना था। मैंने अपने हाथ साफ़ कर लिए हैं, धो लिए हैं और अब मैं खाऊँगी खाना। उसके बाद क्या, आज हम बनाएंगे एक फ्रूट केक। मैंने एक रेसिपी देखी थी और मेरी 2-3 रेसिप्स मिला के वो रेसिपी है, बट मैं 2-3 बार बना चुकी हूँ, तो होपफुली अच्छा बनेगा। सो दैट्स इट। तो मैं आपसे मिलती हूँ लंच के बाद। आई ट्राइड एवरीथिंग। आई वॉज ऑल्सो पुटिंग लाइक अ कार्डबोर्ड थिंगी ऑन देयर, बट इट डिडंट वर्क। To like, I think it needs, I was googling, it needs pliers to be stable. से पीछे था इसकी। Now my mandir is complete. तो ये जो 2 पेंटिंग्स हैं ये भी मैंने बनाई है अभी रिसेंट में। ये मैं कहीं पे भी शेयर नहीं करी थी। सो आई मेड वन ऑफ दिस लाइक जीसस क्राइस्ट का एंड देन आई मेड गणेशा, क्योंकि यहाँ मेरा छोटू सा मंदिर है, तो आई थिंक इट वुड बी नाइसर। तो यहाँ मेरे जो दाल और चावल हैं वो बन चुके हैं और आई थिंक ये थोड़ा सा मैं इनको ढक के रखूँगी ताकि और पक जाए। और यहाँ मेरी जो चटनी है वो मैंने तैयार कर ली है। तो वो मिलान का थाली है जिसमें बस दाल चावल है और ये शानो इट्स टू स्पाइसी बाबू एंड अच्छा दिस यू कैन टेक एंड दिस इज़ माई थाली। इसमें मैंने इसमें मेरा चटनी है और ये मेरा हींग का अचार है। मुझे अचार बहुत पसंद है। तो अभी मैंने अपने किचन और काउंटर टॉप को फाइनली क्लीन कर लिया है और अब हम करेंगे आराम से बेक एंड उससे पहले हम रेसिपी ये, तो अब हम बनाएंगे हमारा फ्रूट केक।
केक को एंड हम इसको बेक होने देंगे ऑलमोस्ट 60 से 70 मिनट्स के लिए। एंड अगर ये ऊपर से ब्राउन होने लगे तो हमें इस पर फॉइल लगाना है। सो वी कैन पुट आवर टाइमर फॉर 60 मिनट्स नाउ एंड डू आवर रेस्ट ऑफ द चोर्स। सो 60 मिनट्स के बाद मैंने अपना केक निकाल लिया है और मैंने टूथपिक डाल के चेक किया था कि अंदर तक मॉइस्ट तो नहीं रहा है। तो अब हम इसको इसी रैप में एटलीस्ट 10 से 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। हमें गर्म केक को कभी भी जो कि है पैन से नहीं निकालना चाहिए। So you have to be very fast to make the 3 seconds to capture the moment I will eat the whole thing. Baby, just cut it. Okay? At first you have to like do. Your hands are clean? Your hands are clean? The towel is right there. Arey yaar. Milan, just normal, plain testing, okay? Without your comic relief. Where is the knife? Okay, then you should do it. This is what I make. I hope you enjoy, guys. You are just coming for tasting. Don't forget to like, share and subscribe for this to see more recipes from mine. It came out pretty nice. Tadobri. It looks very good, okay, Babu? Now you have to cut a piece and show the audience how is it now. Half of them won't believe that I started baking anyway, so. Milan, don't. Take a plate, okay? How is it? What? बहुत अच्छा है. Milan, that's the only line you know, right? बहुत अच्छा है. Baby, honestly, okay? Now, Honestly, पक्का. can I see the closer? Now, can you put it in front of your mouth so I can take a thumbnail for it? So now we eat it and good night.